Hi everyone, welcome to the Shrine of English. So today I have a wonderful news to tell all of you. The news is that we have a special class, we call it English Club. So what is English Club? Very clearly let me tell you what exactly it is. That we are offering Saturday, Sunday 2 2-hour classes. Saturday for 2 hours, Sunday for 2 hours, and this class is especially for the people who wish to join only Saturday, Sunday classes, those who are busy professionals, those who do not have time from Monday to Friday. So I welcome all those people who have been looking for this kind of classes Saturday, Sunday. So grammar, conversation, these two things will be taken care along with multiple other activities. So you can come and join our Saturday, Sunday 2-hour classes. So in this way, in Saturday, Sunday, you are going to get 4 hours. So this is a small information which I wanted to give you, and in today's video I also want to inform you that we are going to start a series, and this series we are going to call it newspaper vocabulary series. In this, what we exactly intend to do, we are planning to make you acquainted with few words, not many, because if I make it a long, so it becomes boring and tedious also, and I'm sure that people cannot really watch a video more than 7-8 minutes. So we'll try to keep it as precise as possible but as relevant as possible. So here we are going to use 5 words today. I will be teaching you, and these words, if you happen to read newspaper, so you will come across these words. These words are also important for the people who wish to speak English, because these are the current words, the words which are nowadays used a lot. So without wasting much time, let me start with the first word. The first word, as you can see on your screen, it is evacuation. Evacuate से ये आया word है, and you can see evacuation. So the definition says the act of moving people from dangerous place to safe. तो ये तो इसकी एक डेफिनेशन है आजकल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको देखें. सो इन अफगानिस्तान दिस वर्ड इज यूज्ड अ लॉट नाउअडेज. द authorities are evacuating their people, like Americans and other nationals, they are evacuating their people because they find that Afghanistan has turned out to be a dangerous place now. So they are taking their people out of the dangerous place. तो जब हम किसी को किसी खतरनाक जगह से खाली करवाते हैं तो इसके लिए इवैक्यूएट वर्ड यूज़ करते हैं. ये वर्ड आप ऐसे भी देख सकते हैं कि whenever earthquake comes, so people get trapped, फंस जाते हैं लोग. So our army, paramilitary forces, they go there and they evacuate people. So evacuate word आप बहुत अलग अलग सेंस में यूज़ कर सकते हैं. हालांकि इसका फिगरेटिवली यूज़ भी हो सकता है. जैसे रेस्क्यू के सेंस में आप इस वर्ड को चाहें तो सिनोनिम की तरह यूज़ कर सकते हैं. Now the next word is glitch. I am sure that the people who are techie, they are familiar with this word. A glitch is a small fault or problem that prevents something from working. तो अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, and suddenly it stops working, so you say, oh wow, what a glitch is there. So if a device is not working properly, anything which is not working properly, so you can use this word, oh there is a glitch. तो ग्लिच का मतलब एक तरह की खराबी, परेशानी कि जो टेक्निकल, लेकिन आप याद रखिएगा ये टेक्निकल सेंस में ही ये वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है. सो ट्राई नॉट टू यूज़ इन योर अदर अफेयर्स. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ एट्रोशियस. आप जैसा कि इन पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पिक्चर्स से भी हमने समझाने की कोशिश की है. अगर आप इवैक्यूएशन के साथ देखें तो पीपल विद देयर बैग ऑन द बैक, they are moving, they are shown in the moving position, so people are evacuating. अगर glitch के आगे आप देखें तो जो एक साइन आपको दिखाई दे रहा है, it's a sign of problem, so sometime it appears when your device is not working. And atrocious के आगे आप देख सकते हैं a man is beating a dog. Actually it's a atrocious act. तो atrocious क्या होता है कि something very cruel और extremely unpleasant. So extremely unpleasant, extreme मतलब बहुत ज़्यादा, unpleasant का मतलब जो अच्छा ना लगे. तो कोई एक्सपीरियंस, कोई एक्ट अगर एट्रोशियस हो, सिचुएशंस कई बार एट्रोशियस होती हैं जहाँ पे एक पर्सन टॉर्चरस फील करता है, तो एट्रोशियस एक्ट के लिए हमने जो यहाँ पिक्चर डाली है, आई थिंक द पिक्चर इज़ द गुड एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड that atrocious, the man is beating a dog. So this is an atrocious act, and of course it can be used in many other ways. Atrocious, जहाँ भी torture का सेंस अगर आ रहा हो तो आप atrocious वर्ड यूज़ कर सकते हैं.
Now the next word if you see arsenal. आर्सेनल अगर आप ये वर्ड देखें तो यहाँ टैंक की एक फ़ोटो है सामने. तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़? अ प्लेस वेयर मिलिट्री वेपन्स और अदर इक्विपमेंट्स आर स्टोर्ड. तो आपने देखा होगा कि कई ऐसी जगह जहाँ पे मिलिट्री वाले अपना सामान रखते हैं, जो अपने वॉर की जो चीज़ें हैं उनके एम्यूनेशंस का मतलब भी हथियार ही होता है कि वेपन, अपनी एम्यूनेशंस जो भी वो चीज़ें जहाँ स्टोर करते हैं, ऐसी चीज़ को हम आर्सेनल कहते हैं. तो अगर आपको याद हो कि कपल ऑफ ईयर्स बैक द टेररिस्ट इन पुलवामा दे वांटेड टू अटैक आर आर्सेनल, मीन्स इट वाज अ थिंग जहाँ पे हमारे इक्विपमेंट्स रखे थे वो वहाँ पे अटैक करना चाहते थे. द लास्ट वर्ड इज़ ऑब्लिटरेट. तो ऑब्लिटरेट के दो मीनिंग है वैसे, लेकिन हमने यहाँ डेफिनेशन में आपको दोनों ही मीनिंग्स ऑलमोस्ट यहाँ बता दिए. टू रिमूव ऑल साइंस ऑफ समथिंग बाय either by destroying it or by covering it so that it cannot be seen. सो ऑब्लिटरेट वर्ड आपने जैसे एक तो देखा होगा कि स्टैम्प वगैरह को जब हम स्क्रैप कर देते हैं, अगर किसी पोस्टल स्टैम्प के ऊपर जब हम उस पर कोई ठप्पा लगा देते हैं तो वी ऑब्लिटरेट इट, मीन्स वी स्टॉप इट फ्रॉम फर्दर यूज़. एक तो ऑब्लिटरेट का मतलब ये होता है. ऑब्लिटरेट का दूसरा मतलब सिंपल याद रखिए, डिस्ट्रॉय करना, नाश करना, ख़राब करना. तो कहीं भी अगर आप डिस्ट्रॉय वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, ऑब्लिटरेट. Now towards the end of it, once again I want to tell that these words are very important for the people who are preparing for any government exams. My piece of suggestion would be for all of you, instead of memorizing so many words, every day take 4 or 5 words and try to use them throughout your day. 5-6 words, more than this sometime what I realize that it doesn't work actually. So if you every day take 5-6 words, if it is possible, paste it somewhere wherever you study, just keep it there and throughout the day try to use it. तो आज आपने जो ये words देखे, आप कोशिश कीजिए कि अपने day to day life में you are able to use them somewhere. If you are able to use these words, wonderful, this is the best thing you can do. So I hope that this small effort of my team and mine going to help you, and you will be happy to have learnt all these words. And in coming videos we'll be coming up with more important words of the days, the words which are frequently used. So if you like it and you have liked it, so please subscribe to our channel and share it with your friends also, those who are preparing for some kind of exams. And don't forget to tell people that about our online and offline classes. Thank you so much. Do take care of yourself. Bye bye.